This is the part B of lecture number 2. When people became a little more settled, they needed more accurate ways of measuring time. So sundials and water clocks were invented. They could mark longer intervals by the new moon and still longer ones by the sun and the seasons. As society became more complicated, writing was invented as history needed to be recorded. It was not good enough to say, when my grandmother was a child, something definite had to be laid down to determine exactly which year it was. Most people made some important event, real or imagined, in their history or religion the starting point for their measurement of time. For international business and relations, especially in the modern world, it was impossible to have several different ways of dating the years. So the Christian one of BC AD was generally adopted, though people still continued to use their own system of dating for certain things. स्टूडेंट्स, जब लोगों ने बेहतर तरीके से आबाद होना शुरू किया तो इन्हें ज़्यादा एक्यूरेट टाइम जानने की ज़रूरत पेश आई। लिहाजा सनडाइल्स और वाटर क्लॉक इजाद की गईं। स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा तवील वक्त के वक्फे नए मून, सूरज और मौसमों को देखकर मालूम करते थे। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, राइटिंग की ज़रूरत पेश आई ताकि हिस्ट्री को रिकॉर्ड में रखा जा सके। स्टूडेंट्स, ये इस बात के लिए सही ना था कि अगर किसी को अपनी दादी के बचपन की कोई बात बतानी हो तो वो कैसे बताए। इसके लिए कोई एक्यूरेट ईयर होना चाहिए था कि ये किस ईयर की बात है। बहुत से लोगों ने अपनी हिस्ट्री या अपने रिलीजन से मुतालिक अहम इवेंट्स के लिए टाइम का एक पॉइंट चूज़ किया कि ये इवेंट किस वक्त होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस और मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेशन रखने के लिए ये नामुमकिन था कि ईयर्स की डेट मालूम करने के लिए डिफरेंट वे हों। लिहाजा क्रिश्चियन के बीसी और एडी के ईयर चूज़ किए गए, अगरचा अभी भी कुछ लोगों ने ईयर्स की डेट के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपने पुराने सिस्टम को ही अडॉप्ट किया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, ओपन योर डॉकेट, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3। How history teaches us to learn from the past. हिस्ट्री हमें पास्ट से कैसे सबक सिखाती है। History teaches us to learn from the past. People have done some frightful things to one another in the past. They have enslaved, tortured, and killed others for religious or racial reasons, and fought several terrible wars. These things happen even today. Most people realize that they are wrong. हिस्ट्री हमें पास्ट से सबक सिखाती है। लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत बुरे सलूक किए हैं। उन्होंने रेशल रीज़न्स या रिलीजियस यानी मजहबी या नस्ल परस्ती की बिना पर दूसरों को स्लेव्स बनाया, टॉर्चर्ड किया और एक दूसरे की जानें ली। The world knows about the dangerous consequences of such awful acts and has set up organizations such as the United Nations to prevent them from happening again. दुनिया इस तरह के awful acts के ख़तरनाक अंजाम को जानती है
इसलिए यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बना चुकी हैं ताकि वो इन्हें दोबारा होने से रोक सकें। Now students, take out your AR and write down the home task. Home task, lesson number 1. Read page number 2 and 3. Learn and write question number 3 in the AR. Thank you and Allah Hafiz.